Hello everyone. Today we will discuss about the theory of separation of powers. What is the meaning of this theory, and we will see this theory in the context of American Constitution. So let's understand what is the meaning of separation of powers. So according to this theory, all the powers of the government should not be concentrated in the hands of one organ. Otherwise, there will be no freedom. The thinkers who support this theory, according to them, the legislature should only make laws. The executive should implement those laws and run the administration according to those laws, and the judiciary should decide the disputes according to those laws. Here comes the Montesquieu, who laid stress on the limitation of each organ and declared that there should be no control of one organ over the other. One organ should neither interfere in the sphere of the other nor should it influence the other. Each organ should be completely free in its own sphere. And the best explanation of this theory has been given by French writer Montesquieu in his book Spirit of Laws 1748, and the founding fathers of the American Constitution were specially influenced by this theory, and we can see there only 7 articles are there in the American Constitution, and Article 1, 2 and 3. According to Article 1, legislative powers, all the legislative powers have been given to the Congress legislature, which is known as Congress in America. So Article 1 gives all the legislative powers to the Congress, Article 2 gives all the executive powers to the president, and Article 3 gives all the judiciary powers to the judiciary. So we can see here total separation of powers as legislative powers, executive powers and judiciary powers. And in practical, this theory can be seen as the president cannot be removed from his office before the expiry of his term, except there is the process of impeachment, which is itself so hard and difficult to implement. And next one is Congress cannot be dissolved before the expiry of its term or tenure. And judiciary, same as there is president, the judges also cannot be removed from their office before the expiry of their tenure, except through the process of impeachment. Next one is checks and balances. It is correlated with the theory of separation of powers. It can be said that the theory of checks and balances, the origin of this theory was because of the demerits of separation of powers, because the separation of powers, this theory cannot be implemented literally. Because if there will be separation of powers, each and every organ of the government will there is a perception that they will misuse their power. So it is necessary that there should be checks and balances in the political system, in the system or in the government. And this theory has been followed in America, as here we can see that judiciary controls both the Congress and the president through the process of judicial review. Judicial review, as we all know, what does it mean? And president controls the Congress and judiciary, as the judges are being nominated by the president, and bills passed by the Congress needs the approval of the president, and president here enjoys the veto power. And Congress controls the president and judiciary, president through impeachment and judiciary also through the impeachment. So when each and every organ controls the other two organs, at that time we can see a balance in the government or in the system. आज हम लोग बात कर रहे हैं शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि जो शासन की शक्तियां होती हैं, सरकार की जो शक्तियां होती हैं, सभी शक्तियां वह सरकार के किसी एक अंग के हाथों में नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जो नागरिक हैं उन्हें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होगी। इसीलिए इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि सरकार के जो तीनों अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका
ये तीनों अंग एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होने चाहिए, अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से स्वतंत्र होने चाहिए और इन्हें एक दूसरे के क्षेत्र में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना, अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होना और एक दूसरे के क्षेत्र में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना, ये कहलाता है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जिसके सबसे प्रमुख विचारक माने जाते हैं मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉज। और ये जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, इसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इसे बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं, वहाँ पर इसे फॉलो किया गया है, क्योंकि जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान निर्माता थे, वो इस थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 1, 2 और 3 के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं। आर्टिकल जो 1 है वह ये कहता है कि जो व्यवस्थापिका शक्तियाँ हैं वह सभी कांग्रेस के पास में रहेंगी। कांग्रेस जो व्यवस्थापिका होती है, जिसे कि अमेरिका में कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 2 ये कहता है कि जो कार्यपालिका शक्तियाँ होंगी वो सब राष्ट्रपति के पास में रहेंगी। और आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ये जो न्यायपालिका शक्तियाँ हैं ये जुडिशरी न्यायपालिका के पास में रहेगी। तो इस तरीके से वहाँ पे शक्ति पृथक्करण किया गया है। इसीलिए हम लोग एक छोटा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे वहाँ पर प्रेसिडेंट और जो जुडिशरी है, जजेस है, राष्ट्रपति और न्यायपालिका के जितने जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, उन्हें इम्पीचमेंट की प्रोसेस के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से अपने जो उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये तो आप खुद में ही काफ़ी ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इसी तरीके से जो वहाँ पर कांग्रेस है, उसे भी उसका जो टाइम पीरियड है, टेन्योर है, कार्यकाल है, उसके ख़त्म होने से पहले उसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है चेक्स एंड बैलेंसेस की थ्योरी, नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत। नियंत्रण मतलब सरकार के तीनों अंग एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कंट्रोल बनाए रखेंगे, नियंत्रण बनाए रखेंगे। और ये नियंत्रण इस तरीके से होगा ताकि शासन व्यवस्था में एक संतुलन बना रहे और कोई भी जो ऑर्गन है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। तो इसे हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत इसलिए आया क्योंकि यदि हम लोग शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को पूरी तरीके से लागू करते हैं तो इसके अंतर्गत ये संभावना रहती है कि सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल रखने वाली सत्ता नहीं होगी। तो चेक्स एंड बैलेंसेस, नियंत्रण एंड संतुलन के सिद्धांत के अंतर्गत हम देख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। जो न्यायपालिका है ये कांग्रेस और प्रेसिडेंट को कंट्रोल करती है, क्योंकि न्यायपालिका के पास में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जिसके अंतर्गत वह कांग्रेस और राष्ट्रपति के कार्यों को चेक कर सकती है और जो भी इनवैलिड वो डिक्लेयर कर सकती है संविधान के विपरीत होने पर। प्रेसिडेंट कांग्रेस और जुडिशरी है, दोनों को वो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो बिल पास करती है, विधेयक पास करती है, उस पर प्रेसिडेंट को और राष्ट्रपति का स्वीकृति जरूरी होती है, जिसके अंतर्गत उन्हें वीटो पावर भी है। और जो जुडिशरी है इसको प्रेसिडेंट कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो जजेस होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। कांग्रेस है ये प्रेसिडेंट और जुडिशरी दोनों कंट्रोल करती है, क्योंकि इसके दोनों के खिलाफ जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है, महाभियोग की प्रक्रिया है, उसे उसका अधिकार रहता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।